हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू मैराथन ऑफ आईपीसी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन रिफ्यूज़ल टू डिस्क्लोज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिंटर इज डेल्ट अंडर। कौन से सेक्शन के अंडर डेल्ट करता है ये? 489D, 489E, 490, 491। आंसर इज सेक्शन 490 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट इज, द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इज एक्सरसाइज इन केस ऑफ। कौन से केस में एक्सरसाइज किया जाता है? पढ़िए ऑप्शंस। Answer is contempt committed in facial cure. Option A is correct. Next is, false statement in connection with elections is dealt under. Elections में जो गलत स्टेटमेंट दी जाती हैं उससे रिलेटेड कौन से प्रोविज़न दिया गया है? 170G, 171G, 172G, 173G. Answer is 171G of IPC. Option B is correct. Next is, a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. सर्जन ने तो गुड फेथ में कम्युनिकेट किया था पेशेंट से कि वो जिंदा नहीं रह सकता, तो उसको शौक लगा पेशेंट को और वो मर गया। तो ए गिल्टी होगा या नहीं होगा, बताइए। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है ये अपनी आईपीसी की। आंसर इज ऑप्शन D, both P and C. A is not guilty as he is rightly discharged his duties. A is not guilty as he did not give any false hopes. Next is the defendant was set to watch his master's premise. He saw a man on the garden wall and held him and then shoot at him, aiming to his legs. He missed and shoot the deceased whom he had not seen. तो इस केस में कौन से ऑप्शन सही होंगे? ए, द डिफेंडेंट इज जस्टिफाइड इन शूटिंग द डिसीज, द डिफेंडेंट इज गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर, द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी ऑन हिज ओन लाइफ वाज डेंजर, या नन ऑफ देम। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पर्सन या प्रॉपर्टी या बोथ ए एंड बी या ईदर ए एंड बी। आंसर इज ईदर ए और बी। पर्सन को हार्म भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को हार्म भी हो सकता है। नेक्स्ट इज, इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। कौन से सेक्शन में दिया गया है एज एक्सेप्शन? 80 में, 81 में, 82 या 84? आंसर इज 82, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 84 है आईपीसी का, वो किस बारे में बात करता है? मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, मोरल इंसैनिटी या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड। आंसर इज लीगल इंसैनिटी। नेक्स्ट इज, इरेजिस्टिबल इम्पल्स इज ए डिफेंस इन इंडिया, इन इंग्लैंड, इंडिया एंड इंग्लैंड बोथ, या नीदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड। आंसर इज नीदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, a hangman who hangs the prisoner pursuant to the order of the court is exempt from the criminal liability by virtue of। ये बहुत ही फेमस इलस्ट्रेशन है। कौन से सेक्शन की इलस्ट्रेशन है ये? 77, 78, 79, 76। बताइए कौन सी की है? आंसर इज सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट इज, insanity as a defense means that a person at the time of doing an act by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing। किसको कहेंगे इंसैनिटी? मतलब डिफेंस कब ले सकते हैं? वो जब वो क्या जानने के लायक ना हो, नेचर ऑफ द एक्ट, या दैट व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, दैट व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या इधर ए, बी एंड सी। आंसर इज इधर ए, बी और सी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? इनमें से करेक्ट बताना है कौन सा है। कि the burden of proof that the accused was not insane at the time of commission of offence is on prosecution। कि जो ये प्रूव करना, ये किसको प्रूव करना पड़ेगा कि जब वो एक्ट कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया, उस टाइम वो इंसेन नहीं था? वो प्रोसिक्यूशन पे होगा या फिर अक्यूज पे होगा कि वो इंसेन था, या फिर देयर इज़ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दैट अक्यूज, या फिर रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होगी कि वो इंसेन था उस टाइम, या it is a matter of inference to be drawn by the court on the facts provided by the prosecution, या प्रोसिक्यूशन के फैक्ट के को देखते हुए कोर्ट बताएगा। आंसर इज ऑप्शन बी।
ये बताना कि वो ऑफेंस के टाइम इंसेन था, ये अक्यूज भी है, अक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, द इम्पेयरमेंट ऑफ द कोग्निटिव फैकल्टी ऑफ माइंड टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी मस्ट बी टोटल, मस्ट बी पार्शियल, both A and B, या none of the above. Answer is must be total. Next is intoxication as defense is contained in, इंटॉक्सिकेशन जो है डिफेंस है कौन से सेक्शन में दे रखा है, 85, 86, 87 या ए एंड बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। एक में वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन है, एक में इनवॉलेंट्रली। नेक्स्ट इज फॉर ए डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द degeneration of mental faculties must be total, must be partial, both and be, only be, above is correct, A is incorrect। बताइए इसका आंसर, आंसर इज मस्ट बी टोटल। नेक्स्ट इज in case where the act involves a specific mens rea in case of intoxication under section 86 of IPC, the existence of mens rea is presumed, the specific mens rea is not presumed, the specific mens rea depends upon the attending circumstances and the degree of intoxication, none of the above। Answer is option C। Next is the doctrine voluntarily non fit injuria is contained in, कौन से सेक्शन में दिया गया है ये डॉक्ट्रिन, 87, 88, 89 या all of them। Answer is all of the above। Next is the defense of consent applies to, कंसेंट का डिफेंस किस पे अप्लाई होगा, प्राइवेट रॉन्ग पे, पब्लिक रॉन्ग पे, या बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, या नीदर ए नोर बी। आंसर इज प्राइवेट रॉन्ग्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज रेस्ट्रिक्टिव in its applicability in cases involving alienable rights, inalienable rights, both A and B, neither A and B। Answer is inalienable rights। Next, the defense of consent is not available in case of, जो consent का defense है वो कौन से cases पे available नहीं होगा, consent to cause death, consent to cause grievous hurt, both A and B, either A or B। Answer is both A and B। Operation of consent to all offences short of causing death intentionally has been extended under 88, 90, 91, 87। Answer is section 88 of IPC। Next, under section 89 of the consent is in respect of infants under 12 years of age or person of unsound mind, can be given by their guardian without any restriction, can be given by the guardian subject to restriction mutually agreed upon, can be given by the guardian subject to restriction imposed by law, या all of above। Answer is option C, can be given by the guardian subject to restrictions imposed by law। Next is the consent is not a valid consent under section 90, कौन सी वैलिड कंसेंट नहीं होगी सेक्शन 90 के अंडर, इफ़ गिवन अंडर ए फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट्स, इफ़ गिवन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ़ गिवन बाय ए चाइल्ड बिलो 12 years of age, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स मीन्स, इस मैक्सिम का मतलब क्या होगा, law would not take action on small and trifling matters, law does not ignore any act which causes the slightest harm, law would not take action in serious matters, या all of the above। Answer is law would not take action on small and trifling matters, option A। Next is the principle de minimis non curate lax is contained in, कौन से सेक्शन में दिया गया है ये, 82, 83, 92, 93, 94, 95। Answer is 95 of IPC, trifling acts। Next is the right of private defense is contained in, इनमें से कौन से सेक्शन में दिया गया है प्राइवेट डिफेंस का राइट, 84, 94, 95, 96, 98। बताइए 96। Next is the right of private defense is based on the natural instinct of self preservation, self respect, self sufficiency, self reliance। कौन से नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बेस है,
जो राइट दिया गया है प्राइवेट डिफेंस का? आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज unrestricted, subject to restrictions contained in section 92-99 of IPC, subject to restrictions contained in chapter 4 of IPC, subject to restriction contained in any other provision of IPC. Answer is subject to restriction contained in section 99 of IPC, option B. Next is right to private defense is available under all circumstances, available where there is time to have the recourse to the protection of public authorities, available where there is no time to have recourse to the protection of public authorities, all of the above. Answer is available where there is no time to have recourse to the protection of public authorities, option C. जब हमारे पास टाइम नहीं है पब्लिक अथॉरिटीज़ को सूचित करने का या फिर उनकी प्रोटेक्शन लेने का. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन इंडिया इज द सेम एज इन इंग्लैंड, is narrower than the one in England, is wider than the one in England, या none of the above. Answer is wider than the one in England. Next is the right to private defense is available with respect to, किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं? हार्म टू बॉडी, हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी या हार्म टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल द अबव. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 98 right to private defense also is available against a person of unsound mind, person who does not have maturity of understanding, both A and B, neither A nor B. Answer is both A and B, option C. Next, every person has a right to private defense of his own body and body of any other person against any offence affecting the human body have been provided under सेक्शन 96, 97, 98, 99. कौन से सेक्शन में दिया गया है कि दूसरे पर्सन की भी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं? आंसर इज सेक्शन 97 ऑफ IPC. नेक्स्ट इज एवरी अंडर आर्टिकल 32 ए रिट पिटिशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय ए पर्सन हु हिमसेल्फ हैज सफर्ड ओनली, अंडर विच द फॉलोइंग a relative or friend of a person agreed can file a writ petition? Habeas corpus, mandamus, certiorari या all of the above. Answer is habeas corpus, option A. Next is the right guaranteed under article 32 can be suspended. जो 32 में राइट दिए गए हैं वो कब किसके द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं? बाय द पार्लियामेंट, बाय स्टेट लेजिस्लेचर, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. Answer is option D. Petition to the Supreme Court under Article 32 can subject to the rule of res judicata except quo warranto, habeas corpus, certiorari, prohibition. Answer is habeas corpus. Next is the right given by Article 32 cannot be abrogated by the act of legislature, cannot be abrogated unless the constitution itself is mandated, can be altered by the state legislature, and none of them. Answer is cannot be abrogated unless the constitution itself is amended, option B. Next is next question है on one Mrs. Komai bought a car on the name of her daughter Kiran, who is a minor, and got the insurance policy transferred on her name, Mrs. Komal. The car met with an accident on 2 counts and she filed for a claim on both the counts. From the insurance agency, she acknowledged the receipt of the money as Kiran. The insurance company has prosecuted under section 467 of IPC alleging fraud on the applicant's part. तो इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? बताइए. Mrs. Komal is not guilty for forgery because the said deceit did not secure her any advantage as the entire transaction was that of Mrs. Komal. Option B is correct. Next is dishonest misappropriation of property knowing that it was in possession of a deceased person at his death and that is
has not since been in the possession of any person legally entitled to it is dealt under 402, 403, 404, 405. Answer is 404 of IPC, option C. Next is 149 criminal breach of trust is dealt under. कौन सी सेक्शन के अंडर डेल करता है ये? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. आंसर इज 406 of IPC. Next is which of the following is false of section 34 of IPC. सेक्शन 34 के बारे में फॉल्स बताना है, ध्यान रखिएगा, ट्रू नहीं है, फॉल्स बताना है. इट इज़ ओनली ए रूल ऑफ एविडेंस, इट डज नॉट क्रिएट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, इट इज़ ए पीनल प्रोविजन. आंसर इज इट इज़ ए पीनल प्रोविजन. ये ठीक नहीं है, फॉल्स ही बताना है हमें. नेक्स्ट इज इन केस P, a married lady was found in a pool of blood and laying on the ground. On the way to hospital in the ambulance, he breathed her last. It transferred in the evidence that when P was seated outside her juggi, her brother came near her and challenged as to why she made a complaint against her own brother R to the police. Her other brother R and Sharma to come. There was an altercation wherein Sharma stabbed her to death. What of the following is true regarding the particular case? अब बताइए, उन्होंने तो बोल दिया कि उसने स्टैब किया है, वो आया था, उसका भाई आया था, उनके बीच में झगड़ा हुआ. फिर तो कौन सा करेक्ट होगा इनमें से? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम. ये सारे के सारे ए बी एंड सी तीनों करेक्ट होंगे. नेक्स्ट इज belonging to gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity is dealt under. कौन से सेक्शन के अंडर डेल्ट होगा ये कि वो डेकोइट के गैंग के साथ बिलोंग करता है? 398, 399, 400, 401. आंसर इज 400 of IPC. Next is buying and obtaining possession of a minor for the same purpose is dealt under 371 of IPC, 372, 373 या 374. Answer is 373 of IPC. Next is which of the following does not attract section 34 of IPC. ये ऑप्शंस पढ़िए आप और बताइए कौन सा 34 के अंडर नहीं आता. आंसर इज ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द co-accused in B. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज habitual dealing in slaves is dealt under. कौन से सेक्शन में दिया गया है स्लेव्स का सेक्शन? 371, 372, 373, 374. आंसर इज 371 of IPC. Next is which of the following is false of section 34 and 149 of IPC. 34 और 149 के बीच में ये दे रखे हैं उनके दोनों के प्रोविजंस. इनमें से बताना है कि फॉल्स कौन सा है. चार ऑप्शंस में थे. आंसर इज option D. Section 34 requires at least 5 persons who must share the common intention, while section 149 requires at least 2 persons to share common intention. Next is A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only a culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z. Which of the following judgment under section 38 of IPC applies to A and B? A is guilty of culpable homicide and B is of murder. B is guilty of culpable homicide and A is of murder. Both A and B are guilty of culpable homicide या both are guilty for murder. Answer is A is guilty of culpable homicide and B is guilty of murder. Option A. Next is the basic principle under which runs through section 32 to 38 of IPC is that कौन सा है? In certain circumstances, a part of the act is attributed to a person who may have performed only a fractional part of it. In certain circumstances, an entire act is attributed to a person who may have performed only a fractional part of it. In certain circumstances, an entire act is attributed to a person who may have performed the whole of it. या फिर
only a fractional part of it. Answer is option B. Next is abatement of an offence if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment is dealt under 109, 1110, 1111 and 112. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? सेक्शन 109 ऑफ IPC. Next is a quarrel arose between C on the one side and A and B on the other. C abused A, whereupon A struck him with a stick and B struck him down with an axe on the head. He also received 2 other wounds with the axe on the other parts of the body. Any one of the 3 axe wounds was sufficient enough to cause death, especially the one on the head. तो इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ गिल्टी फॉर वॉलंटरली प्रोवोकिंग द अटैक while B is guilty of culpable homicide. A is guilty of culpable homicide while B is guilty of voluntarily causing hurt. B is guilty of culpable homicide while A is guilty of voluntarily causing hurt. Both A and B are guilty of culpable homicide. Option C is correct. B is guilty of culpable homicide while A is guilty of voluntarily causing hurt. तो A ने तो आपने देख लिया क्या किया था. बी ने तो उसको कुल्हाड़ियों से ही मार दिया था और वैसे भी उसने 2-3 बार किए थे जो कि सफिशेंट थे. एक बार भी सफिशेंट था उसकी डेथ के लिए. नेक्स्ट इज ऑल अबाउट इंटेंशन इज ट्रू एक्सेप्ट वन. कौन सी ट्रू नहीं है ये बताना है. इज स्टेट ऑफ माइंड इज एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रेयरली सस्पेक्टेबल टू प्रूफ ऑलवेज ए मैटर ऑफ इन्फ्रेंस. आंसर इज एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट the word illegal is applicable to everything which is an offence, which is prohibited by law, which furnishes ground of civil action. All of them. Answer is all of them. Next is several persons assemble at the door of the house of 1K and the appellate struck a blow with a cancha which fell on the left thigh of a workman working in the house of K, whom the appellant and the other wanted to attack, and as the appellant struck at the very first person who opened the door, and that was how that come to receive the injury. तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस केस में? Every person is guilty of vicarious liability excluding the appellant. Only the appellant is to be convicted for the said injury. None is guilty of vicarious liability. Yeah, none of the. Answer is only the appellant is to be convicted for the said injury. Option B. Next is abatement of an offence when one act is abated and a different act is done. Subject to proviso is dealt under 109, 1110, 1111 या 112 of IPC. Answer is section 111 of IPC. Next is in a case the accused was convicted under section 325 of IPC and was sentenced by trial court to 2 months rigorous imprisonment with fine of rupees 500 for offence under section 325 IPC. The trial pending for 7 long years. तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? Both A and C. Option D is correct. A gives Z 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blow which make up the whole beating. As per section 71 of IPC, which of the following should be the punishment? क्या punishment होनी चाहिए section 71 को देखते हुए? A is liable for every blow and should be imprisoned for 50 years, one for each blow.
A is only liable for blows he delivered on the victim. A is liable for one punishment for the whole beating. A should be separately punished for beating and delivering blows. तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन सी, A is liable for one punishment for the whole beating. Next is abatement of an offence punishable with death or imprisonment for life if the offence be not committed in consequence of the abatement is dealt under 115, 116, 117, 118. Section 115 of IPC, option A. Next is abating the commission of an offence by the person, by the public or by more than 10 persons is dealt under 117, 118, 119, 120. बताइए. Section 117 of IPC. Next is concealing a design to commit an offence punishable with imprisonment if offence be committed if the offence be not committed is dealt under 119, 120, 121, 122. Answer is section 120 of IPC. Next is in which of the following death sentence is awarded? कौन से में डेथ सेंटेंस दी जाती है इनमें से? Waging war against the government of India, abating mutiny against actually committed murder, all of them. Answer is all of them. Next is which of the following is true about imprisonment? It is categorized by hard labor. It is categorized by confinement to jail. It is subject to the kind of imprisonment, all of them. Answer is all of them. Next is abatement of an offence punishable with death or imprisonment for life is an act which causes harm to be done in consequence of the abatement is dealt under 115, 116, 117, 118. Answer is 115 of IPC. Next is 281. Abating the commission of an offence by the public or by more than 10 persons is dealt under 117, 118, 119, 120 of IPC. बताइए. आंसर इज 117 of IPC, option A. Next is what is the minimum term of imprisonment in case of at the time of attempting robbery or dacoity the offender is armed with any deadly weapon? He is punished with imprisonment of not less than 4 years, 5 years, 6 years, yes 7 years under section 397 of IPC. Answer is 7 years under section 397 of IPC. Option D is correct. Next is which of the following section of IPC has not been omitted? इनमें से कौन सा omitted नहीं है? 56, 57, 58, 59. Answer is section 57. Next is which of the following section of IPC has been repealed? इनमें से कौन सा repealed किया गया है? 60, 61, 62, both B and C. Answer is both B and C. Next is which of the following section of IPC deals with solitary confinement? 71, 72, 73, 74. Section 73. Next is whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable is dealt under कौन से सेक्शन के अंडर डेल्ट करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 118B, 119B, 120B, 121B. Answer is 120B of IPC, section C. Next is conspiracy to commit certain offences against the state is dealt under कौन से सेक्शन के अंडर डेल्ट करता है? अगेंस्ट स्टेट 120A, 121A, 122A, 123A. Answer is 121A of IPC. Next is concealing with intent to facilitate a design of to wage war is dealt under कौन से सेक्शन के अंडर डेल्ट करता है ये? 120, 121, 122, 123 of IPC. Answer is 123 of IPC. Next is A is beating Z and Y jumps into stop a beating. A Z को पीट रहा था और Y उसे बचाने के लिए उसमें कूद पड़ा. इन द प्रोसेस A इंटेंशनली स्ट्राइक्स Y. तो इस प्रोसेस में A ने इंटेंशनली Y को मारा, जो बचाने आया था उसको मारा A ने.
As per section 71 of IPC, which of the following should be the punishment? 71 के अंडर कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. A is liable for one punishment for voluntarily causing hurt only to Z. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt only to Y. None of them. Answer is A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. Option A is correct. Next is ये क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट वाज मिस्टेक एंड द अक्यूज हैज़ नो इंटेंशन टू कॉजिंग द डेथ ऑफ हिज सन whom he dearly loved. Next is A. The captain of a steam vessel suddenly and without any fault or negligence of his part finds himself in such a position that before he can stop his vessel he must inevitably run down a boat B with 20 to 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in boat B, but in the course of this action A runs down boat C, तो ए गिल्टी होगा, नहीं गिल्टी होगा? ए डिड नॉट इंटेंशनली रन डाउन बोट सी या बोथ एंड सी? आंसर इज ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस. नेक्स्ट इज A accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act. The burden of proof is on the police. The burden of proof is on A. The burden of proof is on the court. Yeah, none of them. Answer is the burden of proof is on A. Option B is correct. Next is the accused without any provocation could hold off the legs of a 7-year-old child and dashed his head thrice in quickly succession, resulting in the death of the boy. Immediately after the occurrence, the accused ran away. The accused pleaded insanity in defense. तो इंसैनिटी का उसका डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसने 3 बार उसके सिर को मारा. तो ऑप्शन रहेंगे ए, द ऑफेंस फॉल्स अंडर क्लोज 3rd ऑफ सेक्शन 300 IPC, मर्डर वाला सेक्शन. The offences falls under clause 4 of section 300 IPC. ये clause 5 या clause 6 में कौन से में फॉलो करेगा ये? आंसर इज द ऑफेंस फॉल्स अंडर clause 4 of section 300 IPC. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज A surgeon knowingly that a particular operation is likely to cause the death of Z. सर्जन है, उसको पता है कि इस ऑपरेशन से Z की डेथ भी हो सकती है. Who suffers under painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith for Z's benefit, performs the operation with Z's consent. तो Z की कंसेंट ली उसने और गुड फेथ में ऑपरेशन किया. उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी डेथ कोज करने की. ए इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. ए डेलिबरेटली कोजेज Z's डेथ. ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस. नन ऑफ देम. So A is not guilty of any offense of option C. Next is assaulting or obstructing public servant when suppressing right etc. is dealt under section 150, 151, 152, 153. Answer is section 152 of IPC. Next is knowingly carrying arms in any position or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms is dealt under कौन सी सेक्शन के अंडर डेल्ट करती है मास ड्रिलिंग मास ट्रेनिंग? आंसर इज सेक्शन 153 of IPC. ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज हार्बरिंग पर्सन hired for an unlawful assembly is dealt under हार्बरिंग अनलॉफुल असेंबली कौन से सेक्शन में आता है? 157, 158, 159 और 160. आंसर इज 157 of IPC. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज sedition as offense was held constitutionally valid in Kedarnath versus State of Bihar.
अस डेल्ट अंडर, कौन से सेक्शन में डेल्ट करता है ये? कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया था सेडिशन को केदारनाथ वाले केस में, तो सेक्शन कौन सा है इसमें? 124A, 128, 136, 138। आंसर इज ऑप्शन ए 124A, सेडिशन का यही सेक्शन है। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू कॉज इज डेल्ट अंडर। जो पब्लिक सर्वेंट है वो लॉ का डिसोबे करता है तो उसके कौन से सेक्शन में डील करेगा? 164, 165, 166, 167। आंसर इज 166 ऑफ IPC। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड इज डेल्ट अंडर। जो पब्लिक सर्वेंट वो अनलॉफुली कोई ट्रेड में डेल्ट करता है वो उसमें कौन सा सेक्शन लगेगा उसके ऊपर? 166, 167, 168, 169। आंसर इज 168 ऑफ IPC। अभी नए सेक्शंस नए तरह से पढ़ने पड़ेंगे हमें, लेकिन इस साल के लिए यही सेक्शंस चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।